Hello everyone. So today we will going to start our new grammar chapter and the name of the chapter is the alphabets and the alphabetical order. So you all must have learned the alphabets in your earlier classes. So let's revise it again. Chapter 1, the alphabet and the alphabetical order. Alphabet is a set of letters that we use for making words. In English alphabet, there are 26 letters. तो अल्फाबेट क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं जो हम वर्ड्स बनाने के लिए यूज करते हैं. तो हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं टोटल कितने हैं? दे आर 26 अल्फाबेट्स. When these 26 letters are arranged in a proper order, it is called the alphabetical order. तो जब ये 26 लेटर्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है प्रॉपर ऑर्डर में तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. लेटर्स कैन बी रिटन इन टू वेज. अब लेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं. द फर्स्ट इज द कैपिटल लेटर्स, दैट इज A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the capital letters. तो ये हम जब कैपिटल लिखते हैं अल्फाबेट्स को तो इस तरीके से लिखते हैं. सेकेंड कम्स द स्मॉल लेटर्स. और जब सेम अल्फाबेट्स को हम स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं, दैट वी से इट एज स्मॉल लेटर्स. दो तरीके से हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स को, एक कैपिटल में और स्मॉल में. तो दीज वर द कैपिटल, नाउ दे आर द स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल a, स्मॉल b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, small p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. तो ये होते हैं हमारे स्मॉल लेटर्स. Now what we have to evaluate in this exercise, let's do it. Match the capital letters with small letters. तो हमें capital letters को small letters के साथ match करना है. The letters should be same, but there are differences that one is capital and one is small letter. तो उनको match करना है. Let's do it. This is the capital T. तो capital T को हम small t से join कर देंगे. Capital A with small a, capital P with small p, capital O with small o, and capital M with small m. Now here are the alphabet trains. Write the small letter below each capital letter. तो ये alphabets की train है, इसमें हमें capital letters के नीचे small letters लिखने हैं, यही वाले. Let's do it. Like there is a capital A and small a, it is written over here. Now it is capital B, then small b, capital C, small c, capital D, small d, capital E, small e, capital F, then small f, then G, small g, small h, small I, small j, small k, small l, and small m. Then small n, small o, small p, small q, small r, small s, small t, small u, small v, small w, small x, small y, and then small z. Now we have to arrange the names of these animals in alphabetical order. तो अब हमें अल्फाबेट पता है कैसे हम बोलते हैं ए बी सी डी, तो उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इन्हें एनिमल्स के नेम को हमें अरेंज करना है. नाउ काउ किससे शुरू होता है? सी से. तो सी फॉर काउ. देन काउ के बाद सी के बाद आता है डी. सो डी से तो इसमें कोई एनिमल नहीं है. तो देन ई, ई फॉर एलिफेंट. देन अगेन ई एफ, नो जी ऑल्सो, जी से भी कोई एनिमल नहीं है इसमें. देन एच से है, दैट इज हॉर्स. H, I, J, K, L, M. तो M से monkey. Now the next exercise, we have to tick the balloon which have the same letters in each row. तो हमें उस balloon को tick करना है जिनका जो है हर row में same letters हो. Like for example, so we have 2E over here. We can tick like this. Then in the second one, we have the two same alphabet Q. We can do this. Then in third, we have what are the two same alphabets H. Then we have the two common alphabets, that is
Okay, that is again Q. Now, in the next exercise, we have to look at the pictures below and circle the objects that begins with the given letter. Now, what we have to do in this कि हमें pictures को देखना है, फिर उन objects को circle करना है that begins with the given letter. तो अब जो A है, like suppose अब ये हमारे पास 3 pictures है first question में, and the alphabet written here is A. तो A से कौन सा पिक्चर जो है इसकी स्पेलिंग जो है हम A अल्फाबेट से शुरू होती है, which object spelling starts with alphabet A, so we have to look after that. Now this is fish, which starts with F. This is a computer starts with C, and this is your X. So again, so this is X शुरू होता है A से, so we'll circle it. Similarly, in the second part, alphabet given here is C. So out of all these objects, कौन सा object जो है वो C alphabet से शुरू होता है? That is B. Honey bee है ये, तो it's again not goat. Goat starts with G, and this is cat. So cat starts with C. So we will circle the cat. Similarly, in the third one, alphabet given here is P. So out of these objects, which object starts with the alphabet P? First one is nurse. Second is parrot, and third is kite. So parrot starts with P, so we'll circle the parrot. Now L. So alphabet L. So कौन सा इसमें से object? L for lion. Now here is the alphabet H. So we have to circle the object with which it is starting from alphabet H. So here it is ice cream, that is tiger, and this is hat. Now, Sarah wants to find her way home, write the missing letters and help Sarah reach home. So what we have to do in this exercise कि सारा को अपने घर पहुंचना है. अब इसमें वो मिसिंग लेटर्स को हमें फिल करना है जिसके हम इसके हेल्प से सारा को हेल्प कर देंगे ताकि वो अपने घर पहुंच पाए. So you all must be knowing the alphabets. So how we have to do is like A, then B, then C, D, E, F, G, H, I, J, K, L is written over here, M. So rest you all can do. I hope you all must be knowing the alphabet, so you can continue this. So I hope you all have understood this chapter. You all can do the rest exercise yourself. We'll meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.